ओके मैं समझ गया। शिंगोंगिन के साथ तुम किस टीम में यूज़ करो? मुझे आई डोंट नो भाई। तब भी C2 का मोस्ट शिंगोंगिन को मज़ा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वेपन नहीं, वेपन नहीं। अच्छा सेकंड फेज का, मैं सोचा इसका। यंगो वी आर बिग ब्रदर्स विद Genshin Impact. Yes. Yes. Okay, let's go do some farming, brothers. हाँ देखता हूँ एक सेकेंड तुम्हारा हैंग का शिंगोंगिन निकालनी है क्या? नहीं ब्रदर, मैं उसको स्किप कर दूँ। आई एम सेविंग फॉर नहीडा। मेरे को खेलना होगा तो मेरे पास दूसरी आईडी है ना निंजा भाई की, उसमें खेल सकता हूँ। ओके डिफेंस या सीडी अटैक डिफेंस। अच्छा है ये अच्छा है तुम्हारा। एनर्जी चार्ज क्यों दिया तुमने सैंड में? अच्छा वो रीसेट नहीं हुआ इसको। अच्छा यहाँ पे भी तुमने डिफेंस ही दिया है ना। डिफेंस यहाँ पे भी डिफेंस है, बट वो अभी तुम्हारा अपडेट नहीं हुआ। ये डैमेज अच्छा खासा नहीं हुआ इसमें। रेशो क्या है? रेशो तो कुछ है तो नहीं, मेरे पास नहीं है ब्रदर। ये निंजा भाई की आईडी है, सेकंड आईडी है, तेज कर सकते हो। ये तो है। लेट्स गो कंटिन्यू आइकॉन क्वेस्ट कंटिन्यू करो तुम ऐसे सेकंड फेज का। क्या होनी चाहिए? ओ बताओ भाई कैसे हो सकते सब निरंकार भाई? क्वेस्ट में हूँ मैं। ओके मैं 11:30 से 12:30, 1:30, 2, ढाई बजे तक, 3 बजे तक। 3 हाँ मतलब वो 3 साढ़े 3 घंटे की स्ट्रीम, जितने देर का आइकन क्वेस्ट चाहिए। Mauvika. Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. I've located the captain. Oh, really? That's great! We also just took a peek at Auroran's memories and discovered something huge! Oh, with his granny's permission, of course. Or no, actually it was... calm down, Paimon. I'll take it from here. क्या और नहीं जाए? Same. So the captain was searching for the source mechanism to reconstruct the ley lines. If his plan is already in motion, that means he knows exactly how to accomplish his goal. We have to stop him. Is reconstructing the ley lines a bad thing? Yes. It's not a simple fix. It would mean sacrificing nearly everything contained within the current ley lines. Very similar to the price of using a gnosis. If he activates the mechanism, it's all over. We need to mobilize our forces as soon as possible. What forces do we have? Kanich, Shilonen, you two, and myself. All other warriors are working to push back the Abyss on the front lines. But
That's अभी very कौन कौन से useful. गेम Not to है mention तुम्हारे you फ़ोन में? lost मेरे your पास अभी power, and they've got the Genshin captain on their Impact, side. Minecraft, Clash of Clans Should get somebody and to break Pokemon Aurora's Unite, legs. That won't Miraibo help us with the and captain, हाँ I'm यही है afraid. अभी तो. In any case, the Masters of the Nightwind are in urgent need of manpower. See, Lali, I was hoping you could head back and help defend the tribe. All right. I understand where I'm needed. I'll head out right away. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. वो बताओ निरंकार भाई कैसे हो भाई? I'll leave him to you all then. 128 बदल. All right, back to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be our ultimate goal. Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea. As you all know, Auroron is working with the captain and we need to stop their plan. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. In any case, a head-on confrontation isn't the best way to solve the issue. Their plan hinges entirely on a single element, the source mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is ours. We'll head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. I agree with Kanich. The two of us can handle it. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front lines. As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure its protection. No. The purpose of the frontal assault is to gather the Fatui forces in one place. That way, it's easier for the rest of us to avoid them. Shilonen, I need you to do what your tribe does best, and dig a tunnel from the outskirts of the ruin. Once we get close to the device, we just need to destroy it. Exactly. The Traveler and I will join her as well. No one can create a distraction better than you, Kanich, not even myself. By combining our strengths, we just might manage to break through the captain's defenses. Understood. Then we should head out now. Just promise us you won't do anything reckless. You cannot face the captain straight on unless you have no other choice. You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. Thank you, everyone. You have my word. I'll proceed with caution. हैंगो जो कि भाई कैसे हो ब्रदर? और भाई आज फ्री हो कि आज भी बिजी हो तुम? Shower me with praise. इसी फोन में ना. अरे भाई गेम तो फन है भाई, कुछ भी बोलो. तुम्हें मजा नहीं आएगा? अरे अच्छे आर्टिफैक्ट डॉप ही नहीं हो रहे हैं यार, क्या करूं?
ये सेम मेरे साथ भी, मैं 1-1.5 महीने से फार्म करूँ नाइडा की आर्टिफैक्ट। अगर तुम्हें 3 दिन के लिए वीआईपी मिला होगा ना, तुम वीआईपी क्यों यूज़ नहीं करोगे 3 दिन वहाँ? मैंने भी तो वीआईपी यूज़ किया है। अगर मतलब अभी कहेंगे खेलने के लिए, पहले ट्राई तो करो कैसा है गेम, उसके बाद देखेंगे बाकी चीज़। ये तो है। आई मीन तुम्हारा नेवंग नहीं जाएगा, पता ये क्या है, ये उसकी तरह है। ये फक नेम क्या था इस गेम का, रोबलॉक्स की तरह है ये भी। तुमने रोबलॉक्स खेला हुआ ना जो कर भाई, सेम वही प्रोसेस है इसका भी आई गेस। All right, this is the place. Their tunnel must be behind that gathering of Fatui guards. Any of the मेरे हिसाब nearby से Roblox mountains की तरह है। could be a good infiltration point, but if we want to stay under the But radar, Roblox- we should approach from the side. हाँ, पर रोबलॉक्स में एडवांटेज ये There are होता only है a few Fatui कि stationed उसमें around तुम्हें the अपने आप पे We should फोकस take करना care of पड़ता them है। first so they can't alert इसमें जो anyone. तुमने बनाया वो सामान कहाँ गया? मेरे को अच्छा है क्या? अच्छा है, आई मीन फन है खेलना। बस दिक्कत ये ना मियाबो का कि उसमें सर्वर नहीं मिलना भाई। अरे माँ की आँख भाई, कहाँ गया मैं तो किया था कल। Let's hope you put up a good fight. अबे क्या गेम है बे? चूतिया गेम है भाई, मैं दिमाग खराब करता है कभी कभी गेंशिन। मैं टच करो उस पर स्विच ना करना भाई। देखो मैं फिर टच किया मैंने, वो टच स्विच क्यों नहीं किया उसमें? अब कर रहा है चूतिया, इतनी देर से जब करो तब नहीं कर रहा है। कौन सा कोड ब्रदर? नहीं नहीं अभी नहीं आया, बताया तो वो आएगा ही नहीं भाई। मुझे उसको पता है कैसा करना पड़ेगा, सेम वही जो मैंने बताया तुम्हें। उसके लिए मुझे वही करना पड़ेगा कि मुझको 3 महीने का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक मिनट कोई ना हिंगा है। All right, that's done. Let's head to the. What do you think, Shilonen? Is this a good spot? Yeah, looks good. We'll take it from here. तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट खाने कितना है? ये क्या होता है? हाँ? स्टोरेज? What the I can fuck? see the inside. अभी तो है Perfect. We'll keep 80 going. GB The rest of you 85 हो should चुका head होगा अभी back. तक। That means Things अभी are मेरे about to पास get स्पेस dangerous. होगा All right. Please take care. 35 GB का मिनिमम। कोई था ही नहीं निंजा भाई, कहीं जा रहे माइनक्राफ्ट कैसे करेंगे?
हाइड हो तो एनिमीज ना आए बस इसमें। मैं और निंजा भाई तो एक साथ थे। Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. You look super cool. Ah, that was some expert level rock clearing, even by my tribe standards. तुम्हें पता है जो कि भाई मैंने 3 सबसे हाईएस्ट लेवल के पोकेमोन पकड़े बस बॉस को छोड़ के, बॉसेस मारने बाकी हैं That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the साथ side. साथ का नहीं 18 लेवल के पोकेमोन पकड़े मैंने। आई मीन वो कम नहीं होता, वो पोकेमोन गो की तरह होता है कि तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग वो सेट रहता है, बट उसका पावर उसी के हिसाब से रहता है। मतलब तुम्हें लेवल तुम जितना भी वो कहते हो ना, जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वो इंक्रीज हो जाएगा उनका भी। आई मीन वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बाकियों के मुकाबले। मुझे गोस्ट टाइप मुझे भी पकड़ना है, गोस्ट टाइप मुझे मिला नहीं। मैं घर बना है, गोस्ट टाइप आया और मेरे को मार के भाग गया भाई फिर बाद में। गोस्ट टाइप थोड़ा डम है। छोटा भाई के पास हो क्या? आगे छोटा भाई के नहीं, मेरी भतीजी है वो, और वो मेरे को परेशान करती रहती है। उसे कुछ भी चाहिए होता तो वो रोना स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्या लॉजिक है भाई। बोंग दे, आई मीन बोंग तो नहीं सकती तो इतनी छोटी है, बट एटलीस्ट उसकी साइड देख तो नहीं, उस चीज़ की साइड। अरे भाई मैं दिमाग का दही हो जाता है, सीरियस नहीं बोलूँ। नहीं मैं मैच्योर था भाई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मैं बचपन से ही समझदार हूँ। सीरियसली मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बताया हुआ है। मेरे छोटे भाई के सामने कहते हैं ये चीज़ कि मतलब जितना मेरा छोटा भाई परेशान किया था ना बचपन में, उतना मैंने नहीं किया था। मैं क्या कहता था, मैं थोड़ा पूछ के हर चीज़ करता था। This spell is from the Masters of the Nightwind. It's Auroron's doing. They're probably trying to buy time. तो फिर आ गई भाई यहाँ पे। भाई फिर आ गई मेरे पास भाई, भाग के। अरे भाई गेट बंद कर दे भाई, चाचा घड़ियों के वहाँ से मत करो, भाग यहाँ से भाग, आइयो मत अंदर। बहुत परेशान कर चुकी तू आज मुझे। अरे वो आए तो सही, वो गेट वेट बंद कर देना, वो गेट खोल क्यों देती बार बार। Mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try. किनका? अरे कितने पुंग से हो गए? आई मीन मेरे पास अभी है 1.5 आई मीन 2 पुंग होने वाला होगा मे बी। तुम्हारे पास कितने पुंग हो गए निकंगा भाई? वेट ये कहाँ सेट कहाँ होगा? मेरे को सेट दिख नहीं रहा। अच्छा Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to be friendly. आई थिंक यहाँ पे होगा सेट, यहाँ पे। अबे यार
नहीं नहीं, वो सब घर के अंदर रख दिया मैंने, वो बेंच वेंच, वो टेबंग वेबंग, वो चेस्ट वेस्ट सब घर के अंदर। अबे वो स्टॉप पे टच करना था, व्यू पे टच कैसे हो गया? 3 पुंग है अभी, यस 83, आई मीन मैं 3 नहीं 83 बोलना चाहता था। अबे मुझे थोड़ी जल्दी करना पड़ेगा स्टॉप। 40 की पिटी 83 पुंग्स तो टंग आई है। अबे यार ये क्या है भाई, मैं जैसे ही उसको सेट करता हूँ तब तक वो ऐसी ऐसे हो जाती है। परफेक्ट टाइमिंग कैसे सेट करेगा बंदा यार? Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp. आप देखो इस पे गंगा जगह उग गया वो। Has an अरे enduring माँ की यार भाई aftertaste. बहुत घटिया है In ये। Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored to appreciate it. सांगे के अब पाजी कितना फिर? पाजी फाड़े आप पाजी, कोक शोक पींगो पाजी। हुआ क्या? अब पाजी तो कयांग तो मस्त है जो भाई, तुम्हें नहीं पता पाजी ने क्या किया है। पाजी ने नहीं नहीं माइनक्राफ्ट नहीं खेलूंगा मैं भी। पाजी पाजी फाड़े पाजी। पाजी वाई आर यू गे पाजी? हैं? पाजी गे है ना इसमें। अरे माँ की यहाँ गंगा जगह टच हो रहा है, एक्टिवेट की जगह। नहीं नहीं मैं आज वो खेलूंगा, गेंशिन खेलूंगा अभी। आज माइनक्राफ्ट के कम ही चांस है आज खेलने का, कोई है ही नहीं। यू आर कमिंग। भाई मैंने क्या पूछा? मैंने कहा यू आर कमिंग भाई, हाँ या ना बोलूंगा। तो माइनक्राफ्ट में क्या? माइनक्राफ्ट आई मीन यू आर कमिंग इनसाइड माइनक्राफ्ट। This must be it. बैड जब भाई बैड का ग्रिप। Oh, the captain's here too. Perfect. Looks like they focused their defenses over there. Oh, they're here. I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too late anyway. Stop! It's too late. We need to turn it off. अभी तुम बीच में चले जाओ, जब माइनक्राफ्ट खेलना तो मैं बताऊंगा। ठीक है। संगा 40 में शुगर ज़्यादा कर दिया इन्होंने पहले से। I won't let you do this. The sound of a
Now's our chance to turn off the device. जो कि भाई ऑफलाइन है, अभी थोड़ी देगी नहीं। किसमें? Auroran? How did he just... Chameleons have gotten a lot faster. Was Auroran always this good in battle? This ends now. Something's wrong. You are not Auroran. Who are you? What? Commander. You. So, वन पंगा से मॉन्ग नाइट स्टैंड। I'm glad. Although I believe you have some more pressing डार्क concerns. नहीं, डार्क सा बजिएगा, फोन का नाम बताएगा। वन पंगा से 1 = 2। You see? You indulge your sense of honor for just a moment, and now you've lost your chance. Even now, you're still the same as ever. His voice is 80 आ जाएगा। different. Is someone inhabiting Auroran's body? अच्छा, मुझे Stop 30 worrying सुनाई about पड़ा। other people's survival, about their losses. भाई and हम सब लोग 3-4 sacrifices. फोन है, तुम्हारे You पास just 3-4 need गनफाइट है, जो to कर win. भाई ये भी तो सोचो। It must be why I've returned. For this moment. Please. हाँ ये तो है, अगर set out मेरे पास to अगर do, होता तो फिर मैं Commander. फोन में थोड़ा ना बिजी होता। I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Abandoning one's comrades is not the way of a warrior. Why do you care about a doomed man? I know you can see it. He's already close to death. After all, his soul has been incomplete from the start. भाई मैं पोको कंपनी का नहीं, मैं गया था एक फ़ोन पता करने के लिए स्टार्टिंग में सैमसंग का, फिर वो पता चला वो बंद ही हो गया फ़ोन यार। भाई जिसको चलाने नहीं आता उसी के पास हैक करता है। मेरे पास पता है सैमसंग में बचपन से यूज़ करो, मेरा कभी हैक नहीं हुआ आज तक। नहीं मजाक से क्या बोलूँ, जिनको फोन यूज नहीं करने आता ना वही सैमसंग का फोन को हैक करवा सकते हैं। आओ तुम कैपेसिटी से ज्यादा कर देते हो भाई, तुम्हें पता है भाई, कैपेसिटी से तुम ज्यादा कर देते हो तो तुम्हारा हैक हो गई। I heard everyone wanted me to be the savior. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? भाई उसका सब सॉफ्टवेयर अपडेट ये सब आता रहता है, तुमने किया है उसे? Even if they do, why would you have to make... तभी तो मैं क्या भाई, मैं वही तो बोलूँगा, जिसको फोन यूज नहीं करना था उसी का हैक होता है, क्योंकि वो उसको मेंटेन रखते नहीं है। पहली बात तो भाई बड़े लोगों के फोन में ना 15 ऐप फोन में हमेशा खुले रहते हैं, उनको बंद करो पहले तो, तब जाके तुम यूज कर सकते हो। Can I give you anything else? Some grilled meatloaf, maybe? अरे वो नहीं किया भाजी, मैं उनका फ़ोन को तुम्हें करना क्या, उनकी मर्जी से वो कैसे भी यूज़ करें। मैं अपना बताऊँ, मैं सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ 2008 से। मेरे पास सैमसंग एस सुपर एमगड ऐसा कोई नाम था उस फ़ोन का, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो था मेरे पास। और उसके बाद मैंने सैमसंग का इतना क्रेज़ हुआ कि मैंने सैमसंग के सारे फ़ोन यूज़ किए हैं मोस्टली। तो क्या मैं बताया तो, मैं 8 साल से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं।
मैं 8 साल का था तब से मैं फ़ोन यूज़ कर हुआ 7-8 साल से। A merchant? He's far too honest for that kind of work. तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे कि भाई ये क्या डम चीज। मेरे पापा यूज़ करते थे 2300 का फ़ोन, ठीक है, 2300 का एक फ़ोन आता था सैमसंग का बटन वाला, फ़ोन पे बात करने के लिए नॉर्मली वो, और मेरे पास था मोटोरोला का फ़ोन जो कि 8,500 का था, और मैं अभी 11 साल का हूँ। नहीं, मैंने बचपन से यूज़ किया है। मैं 7-8 साल की उम्र से फ़ोन यूज़ करूँ। आई मीन मेरे पास एडवांटेज ये था ना कि मेरे को मिल जाता था, क्योंकि मैं मोस्टली पापा के साथ रहता था, तो मैं हमेशा मेरे पास एक स्पेयर फ़ोन रहता था ताकि मैं फ़ोन पे बात कर सकूँ कुछ भी। और हमें मैं पता है सबसे बड़ी बात है, मेरे घर में हमेशा 2-3 फ़ोन एक्स्ट्रा रहता था, तो हमेशा एक फ़ोन मेरे पास रहता ही था। अभी भी है, ऐसा नहीं है, फ़ोन अभी भी है, नहीं है, अभी भी है, बट यही है कि अभी वो फन नहीं रहा किसी और का फ़ोन यूज़ करने में जब तक वो तुम्हारा ना हो। तुम्हारी एज कितनी है? 23 बोले? Other shamans study their whole 24, lives sorry, without 24. reaching a fraction of my abilities. Because you're a genius, right? अरे पाजी, अब मैं अपने फ़ोन के बारे में बताऊंगा तो तुम कहोगे यार फ्लैक्स कर रहा है। मैं OnePlus का जो नया फ़ोन आया था ना इंडिया में, जो फर्स्ट मॉडल लॉन्च हुआ था OnePlus का, मैंने वो भी यूज़ किया हुआ है। मैं आईफोन का फर्स्ट मॉडल यूज़ किया हुआ है जिसमें बॉडी पीछे से कर्व होती थी, पर मुझे आईफोन का वो पसंद नहीं आया था, बिकॉज वो थोड़ा सा वैसे ही था ना, शेयर नहीं कर सकते ये चीज़ वो चीज़। उसके बाद मैंने आईफोन क्यूट कर दिया और उसके बाद से आज तक यूज़ नहीं किया। मजे तो है भाई, ये तो है। आई मीन उस टाइम क्या था ना, मैं यूज़ कर लेता था फ़ोन, बट अब नहीं मन करता मेरा कि घर के कोई फ़ोन यूज़ करने की नहीं, क्योंकि वो परमानेंट मेरे पास नहीं रहता था ना, 8-10 महीने तक 11 महीने तक, जब तक वो फ़ोन चेंज नहीं हो, किसी और नहीं है उसको। पर ये था कि जब मेरे पास वो फ़ोन रहता था तो मेरे पापा मम्मी कोई नहीं रहता था, मैं बड़ा भाई भी नहीं, ना ही मेरा छोटा भाई, कोई उसे छू नहीं सकता जब तक मेरे बड़े भाई को उसकी नीड ना पड़े, क्योंकि वो होता हमेशा मेरे बड़े भाई का ही था। Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroran. No matter what anyone else has to say. Granny didn't say it outright, but I think she was trying to comfort me. Don't force yourself. Don't beat yourself up over the past. That's what she always says. पाजी, इससे भी मेरे पास एक काउंटर है, बट मैं कह नहीं सकता, तुम्हें पता है I never forced myself. कि हर कोई होता है, क्योंकि हर कोई उसी चीज में से आता है। अगर तुम किसी और चीज से आए हो तो तुम भाई कुछ होगे। Hey, you zoning out over here again? There's such a thing as I mean, अगर लॉजिकली सोचा जाए जो कर भाई, तो हर कोई उसी चीज से आया, ठीक है। I was just जैसे looking कोई at the aphids. दिल्ली से आया तो दिल्ली वांगा, यूपी से आया यूपी वांगा, कोलकाता से आया तो कोलकाता वांगा। I noticed some on the ground. तो Maybe it अगर got too cold yesterday and they पर्सन couldn't handle उस पार्ट से नहीं आया है bummer. तो किस पार्ट से आया है? Less honey this year. Aoife, do you think being a vet is fun? ऑपरेशन से भी उसी पार्ट से आता है, आएगा तब भी उसी पार्ट से, वो बस उस पार्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। Fun enough, I guess. I don't have anything else to do. चैट मिस, कौन सा चैट मिस हुआ पता है? तुम्हारी एज मैंने बताया तो एज में 24 है पता है। आई मीन वो डेथ सिचुएशंस में होता है कि जब तुम मदर अब पुश नहीं कर सकती तो तुमको उसके टमी के थ्रू निकालना पड़ता है, या फिर किसी सक्शन ट्यूब की तरह, पर उसमें होता भी वही है, निकलता उसी पार्ट से है, बट उस पार्ट को थोड़ा सा वाइड करके तुम्हारे सक्शन कप के थ्रू निकाला जाता है। Trying to outsmart you, Brad. Come on, give me a hand. अब मुझे ये बता पाजी, अब तुम कहाँ से आए हो? क्योंकि तुमने अभी मुझे जो कहा है तुम वो नहीं हो, तो तुम कहाँ से आए हो कि नहीं हो? पहले ये बताओ, हो कि नहीं हो? तो My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep me in one piece. अगर मैं सिर्फ बताऊँ कि मेरे पास है भाई, मेरे पास हर अब्यूज का काउंटर है, बस मैं यही है कि मैं कर ही नहीं सकता बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है। यो जो कहो भाई, Why struggle? It's a miracle you were even born. कौन? Just close your eyes ये कौन है? and wait.
मैं इंस्टा came चेक out of nowhere. यूज नहीं करता भाई, मैं इंस्टा के लिंक्स नहीं देखता नहीं भाई। उसके जो डार्क सर्कल उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये बहुत अजीब एक चीज आती है Weakling like you. I'm not weak. There's just a limit to what I can do. मोस्टली मैसेजेस या फिर एनिमे यही आता है मेरे इंस्टा पे बेसिकली। मैंने अपना वो शॉर्ट और इंस्टा फीड को मैंने प्योर रखा हुआ है, ज़्यादा गंदा नहीं होने चाहिए। Really think a useless thing like you can save the world? Useless. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? कुन्नाव नाम की एक जगह है, पता है? Why would you have to India become में। that person? Hmm? Exactly. Most people live like that. No नहीं। special purpose or calling. That's just how the world works. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay पानी में? behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand तो a उसको तैरना, chance. I mean वहाँ पे नाइफ गार्ड नहीं होता जो स्विमिंग पूल में डूबते हुए बच्चों को बचा Warriors सके। fighting on the front lines. I want to do my part too. लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई जिसने नहीं किया। हैंगओवर आयुष भाई कैसे हो आप? But your end will come sooner than mine, because you've been broken from the start. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, I will take temporary control over this body. I will serve my commander until the end. I am fine. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my life. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here. No! I won't die here! Aurora. That voice. ओके तो Control your मैंने mind. नहीड़ा है, Feel the ground beneath जैसे your ही feet. This is नहीड़ा not आई your end. उसको मैं निकाल के उसी दिन लेवल 90 और मैक्स कर दूंगा, जितना मैक्स कर सकूँ मैं। टैलेंट वैलेंट सब 6 या 8 करने की कोशिश करूँगा। जब तक वो 90 और अच्छा खासा टैलेंट नहीं हुआ तब तक मैं उसको पॉज नहीं करना इस टाइम। चाहे वो 6 घंटे की हो जाए, चाहे 8 घंटे की हो जाए, चाहे 10 घंटे की स्ट्रीम हो जाए, पर कंटिन्यू खेलना है वो। जब तक वो लगभग 90 और मैक्सिमम जितना पुश कर सको उस दिन। टैलेंट अगर ना हुआ उस दिन तो टैलेंट नहीं कर पाएंगे। टैलेंट 2 महीने अगर नॉक हुए तो। What do you mean? Don't try to talk. Focus on holding yourself together. I can't believe the captain पूरा did सपोर्ट that. बिंग नहीडा टिपंग ईएम। Thinks of Auroron as a comrade. हम्म He was helping to rein him in all this time. मैं चाह के भी नहीं कर सकता बाजी। नींद की बात नहीं है, 3 बजे तक तो बंदा वैसे भी देखता है, 2-3 बजे तक, 5-6 बजे तक तो पुश ही कर लेता है। बट ये पेरेंट्स संगाव नहीं करेंगे ना। Damage to the soul. Yes, is a Ayush bhai. tricky thing. हैंगओवर The निंजा pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on to yourself. That's no easy feat. The worst appears to be over. I'm sorry for causing so much trouble. भाई आज खाना खाने में मजा We can आता talk है about भाई। that आज भी later. दिन आता है मजा खाना खाने में। टेस्टी टेस्टी भाई, Our plan पूरी सब्जी भाई। failed, didn't it? I'm वो sorry. होता है ना, We were वो हमारे so घर के सामने close. वो होता है, क्या कहते हैं, You saved भंडारा my कहते हैं life. उसे। And वो now, होता है। the debt is repaid. अभी वो आए, अभी आएगा आंटी देने आएगी घर पे, जिनके I never जो करवा thought you गई actually घर wanted पे to खाना देने sacrifice आएंगी। yourself in that डू यू वांट टू ceremony. प्ले अ गेम But you आफ्टर never स्ट्रीम? gave up. व्हिच गेम ब्रदर? Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? I just want an answer.
a reason why I exist and why I mean, खुद के घर पे भी वही बनाया है, मैं सीरियस हूँ, तो खुद के घर पे भी वही बनाया और वो भी बहुत टेस्टी बनाया है, बट जो बाहर से आएगा ना वो भाई उसका टेस्ट, क्योंकि वो No one is born a hero, and no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important back then, but I क्योंकि हमारे यहाँ पे वो हमारे यहाँ पे जितने हम सब मिल के करवाते हैं ना, तो हम सब भी अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे किसी ने आटे की कट्टे दे दिए, किसी ने सब्जियां मंगवा दी, किसी ने ये सब, तो ऐसे हम सब ने भी कम किया है ना उसमें, तो हम सबके घर पे आता ही आता है। एंड मुझे बहुत वेट करूँ, बस आएगा शाम को 6 बजे के बाद, जिस चीज़ का मैं वेट करूँ, 4:30 या 6 बजे टाइम आएगा वो। और मैंने अभी तक खाना खाया नहीं है। अब मुझे भूख लग गया यार, मुझे कुछ लेके आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। Which game do you want to play? फक भाई, कैसे ये मैं कैसे बताऊँ? वेट में कुछ खाने के लिए निकालो यार, 1 सेकंड में। It can take a lifetime to truly discover who we really are. Like you, I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed my life for this nation. Now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name, BD. It means devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, you will offer all of your strength and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sanhaj. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. I'm back. I am happy to see your plan advance one step further. Do you want to play Mobile Legends or Roblox? It seems Brother, that my criteria Minecraft खेलते हैं। irreversible damage. क्या नाम है आपका? So be fuck आयुष भाई। What is that voice? Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Oh भाई, it's time to eat भाई। Lord of the Night? आयुष भाई Minecraft खेलते हैं, मजा आएगा। Rules over the Night Kingdom? I preside over a realm of souls. Due to my limit, when you activated the divide, most of you were unaffected, and yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength. इसी स्ट्रीम के एंड में। A truly impressive feat for a human. So, was that what caused all his strange behavior earlier? No. An additional soul was affected. आयुष भाई मैं आपको लिंक दे दूंगा Minecraft डाउनलोड करने का Discord पे, आप मुझे मैसेज कर देना। Ultimately expelled. However, this soul does not hail मैं निंजा भाई को दिया हुआ नहीं, कौन सा नहीं or the Night Kingdom. जो कर भाई। Its origins remain a mystery to me. लिंक दिया हुआ भाई। Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I वो Minecraft 29 रुपीस का है भाई, इतना सस्ता क्यों कर रहे हैं? otherwise known as the Night Kingdom. The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. मैंने 650 रुपए का Minecraft खरीदा, 29 रुपीस का कर दिया इन्होंने।
To aid the people मेरे of पैसे refund Natland, the करो भाई। Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's ये how the आइकॉन Night कश में वॉइस क्यों Kingdom नहीं आ was रही born. माविका की? The first Pyro Archon, Xbalanque, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the Abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right. मैं रीस्टार्ट करना पड़ा गेम फक भाई ये क्या गेम है? अच्छा वैसे ही है नहीं कच्ची माविका की आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले अचानक से आना बंद हुई माविका की तो पाइमोन की नहीं आ रही What the fuck? Oh. अबे यार पता है गड़बड़ हो गई आवाज आ गई थी मेरी आवाज वो मेरा ईयरबड्स ना वो हो गया था बंद हो गया था ब्लूटूथ अपने आप ही क्योंकि मैंने बहुत देर अभी खाना खाने गया था तो निकाल के गया था ना तो वो शायद सेविंग मोड की वजह से बंद हो गया था नहीं मेरा है नहीं वो सिर्फ वो चैट के लिए है मिराइबो शाम को मैं मिराइबो करूँगा 5 बजे से अभी तो मैं गेंशिन ही कहूँगा ना कि गेंशिन का आइकॉन प्रेस करूँ इसमें गए कम से कम 1.5 घंटे I am happy to see your plan advance one step further. It seems that my cry did not cause irreversible damage. I mean, Miaibo thing. Just as I thought. Minecraft के chances कम हैं. अरे Minecraft में आ ही नहीं सकते ना डार्कस्टार बाजी वंगड में है मैं ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगा और तुम दोनों जो कि भाई क्या खेलेंगे फिर और मैं अभी गेंशिन में हूँ गेंशिन में ये कम से कम नहीं 2 घंटे से ज़्यादा I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend my existence. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. A truly impressive feat for a human. डार्कस्टार बाजी So, was that what caused all his strange behavior? बीच में की स्ट्रीम को पहुंचोगा भाई तुम भी डार्कस्टार बाजी के साथ No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your friend's soul, but was ultimately expelled. However, this soul does not hail from Natland or the Night Kingdom. Its origins remain a mystery to me. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natland's ley lines. Otherwise, The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natland's ley lines took the worst of the damage. To aid the people of Natland, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. मैंने आज तक स्ट्रीम पे अभी खाना नहीं खाया है पर आज कंट्रोल नहीं करवाया The first Pyro Archon,
Xbalanque strengthened that realm and established the rules Yes, that Ayushwari. aid our fight against the Abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right. Perfect. You said before it all came from the power of the heavens. The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method जैसे मटर पनीर होता है वैसे ही ना. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley lines. Brother, enjoy. And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I am the only possible vehicle for the power generated by the device. It was an incredibly crude and painful method. पता है जब तुम कोई चीज दूसरों के लिए बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली टेस्टी हो जाती है मेरे हिसाब से. Now, I can speak to you like this and provide you with aid, such as rebuilding the ley lines. क्योंकि आज जैसा टेस्ट किसी और दिन नहीं आता और आज के और हर नवमी के दिन टेस्ट आता ही आता है. और इसमें सोचो आधे ज़्यादा चीजें तो पड़ी भी नहीं है. Kind of sacrifice. The people of Natlan worship me and call me their lord. वही तो In the ancient past, खुद के लिए बनाते तो टेस्ट नहीं आता है. we were also known by a different name, angels. जब कि इसमें प्याज But नेशन कुछ भी adventurers नहीं like है. you are probably more familiar with our devolved form, Sealies. No wonder there are Sealies around here. A Sealie also helped us in the Night Kingdom. Few angels remain in that land, so the same is true of Sealies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. Now, नींद भाई जल्दी I जाओ. have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. खाना खाने. I am very pleased. Moika, inheritor of Xbalanque's will. नहीं वो जा रहे अभी वो भी जा रहे ना मंदिर. Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken. And the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with power. Say the word, and I will once again work to fulfill my mandate, just as I did thousands of years ago. वो देखना पड़ेगा मैंने मुझे पता नहीं है. Nod your head. For the sake of your people, मेरा डोन में nation, सर्वर से नहीं कैसे करते हैं. for the sake of overcoming the invasion from the abyss, give me your orders. I will not. After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. Humanity's survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss, what then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. मैं कहूँगा शाम को मैं आई Too डोंट. much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? The situation hasn't gotten that dire yet, has it? MRIBO. नहीं है. Why?
Because I am a survivor of Conria. I've witnessed the devastation and terror of the Abyss with my own eyes. Conria? That's right. My family, my comrades, my homeland, we're all lost to the Abyss. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years. You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. I would do whatever it took to ensure their survival. You have that chance before you now. Why do you refuse to take it? Because we don't have the right to make that decision. मैंने भी खांग We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world would then become fundamentally different beings. Their physical bodies Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future. Or history could repeat itself. The Abyss could invade once more, and it would all be for nothing. Can I say something? I once carried the hopes of many people, and I was also मैं एक काम करता हूँ सुनो मेरा आईबो खेलते ठीक है मैं ये क्वेस्ट 1 घंटे की स्ट्रीम हो चुकी है मैं ये क्वेस्ट पॉज करूंगा जैसे इसका कोई पॉज ऑप्शन है तो हम तीनों मेरा आईबो खेलेंगे ठीक है अच्छा तुम मेरा आईबो खेलेंगे जो कभी I refuse to forget that. My feelings were so strong. They overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety. No matter what path lies before us, we still have a destination. If we lose our way now, we will lose the meaning of our VIP 151 में तो आना है तुम्हें. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Their sacrifices are our blessings. Asia. Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. I don't want to give up just yet. Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I stand at the ready. किसके साथ नहीं जा भाई? Even if you साबुन के साथ ये शैम्पू के साथ need only send someone my way. My offer is यार ये वो है nice boy. Humanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. मतलब साबुन भी नाइस बना तो चूज कर भाई. Dazzling like the sun. You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land or its people? Pretty sure he wants to hear what you have to say, Traveler. Fine. I suppose we can wait. Now that Auroron has inherited the memories of his forebearer, there's only one hero left. Your plan does have the potential to generate the best outcome. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui under my command. Thank you. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life. But for now, I'm willing to fight by your side. Yeah, boy. All right, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats outside. Good idea. We need to explain the situation. Oh, guess we'll stick around then. I'll update everyone outside. Let's meet back up at the stadium.
कैप्टन एंड मावी का एक साथ आ गए भाई फाइट करने के लिए। यो दिस इज नाइस। जो कि भाई कैप्टन और मावी का एक साथ फाइट करेंगे एबिस के अगेंस्ट। तभी तो देखा, तभी तो इस पॉइंट में बता दूं मैं, मुझे पता है तुमने नहीं देखा है। You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have them. They do not like being mentioned by name by any living being, be it an ordinary human or one of the seven. They prefer to remain in the shadows as shade. The one you wish to know about? I call her the ruler of death. She helped Naplan establish the rules. It was also under her guidance that I created the Main Kingdom. It was an expression of love, as well as an act of liberation. She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade, which quite displeased the Almighty. Heavenly principles. YouTube पे है कैटेगरी है उसकी। She succumbed to self-pity as a result. I no longer cared if others discussed her identity. I mean वो कैटेगरी इस जल्दी नहीं आया, एक्चुअली वो आएंगे एक्सेस वर्गों ने भी डाला होगा ना वीडियो, तो इस वजह से। All but a select few. तो दो। Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to speak plainly to conserve energy. You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. Ah, yes, yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. Probably because the young girl from the Masters of the Nightwind is absent. No matter. I'll reach out in a dream and tell them what needs to be done. Young girl? What? Did I say something wrong? You come to me with many questions. And you should be... Ah, yes. Yes. No matter. Young girl? एक काम करो ना, चेंज करूँगा ना तब तक तुम। Come to me with many questions. मैं बताओ ना, सुनो, VIP तो तुम्हारे पास है ही, तुम 151 ज्वाइन करेंगे ना? अगर तुम अपने वो बैंक आइकॉन वहाँ पे जाओगे ना तो तुम्हें VIP एक्सेस मिलेगा। उसके अंदर रिवॉर्ड्स आया होगा ना, तुम्हें आएंगी वो, तो उसमें आएंगी वो जो करने का, तो उसमें एक गोल्डन वाला जो रिवॉर्ड बॉक्स होगा उस पर टच करोगे तो VIP कार्ड मिलेगा 3 दिन के लिए फ्री। तो उसको यूज़ करोगे तो तुम्हारे 3 दिन के लिए VIP फ्री हो जाएगा, तुम VIP वाले सर्वर ज्वाइन कर पाओगे। तीन दिन के लिए मिला है मुझे तो। टंग तो मैंने बहुत मजे किए, मैंने दिमाग भी यूज़ किया, लेकिन पता है मैं एक पोकेमोन को पकड़ने की कोशिश करा, नहीं पकड़ पाया। मेरा 7 के पोकेमोन थे, फिर मैंने गया बेस को अपग्रेड किया उसका, और उस पर 4 पोकेमोन बिठाया, फिर एक को हिट करके अपने पास लाया, और मैं 4 पोकेमोन ने उसको इतना मारा कि मैं उसे कैच कर पाया। कहाँ मैं एक पोकेमोन से फाइट कर रहा था, कहाँ मैं 4 पोकेमोन एक साथ फाइट कर गए थे। तुम वहां से उठा सकते हो उसी पुलिस पे, सामान वहीं पे है तुम्हारा। मैं बॉस के पास कभी गया नहीं पिकनिक में अभी तक, मैंने बॉस फाइट नहीं किया अभी तक। मैंने साइड में पोकेमोन पकड़ा हूँ, मैं ट्राई करूँ जितना हाईएस्ट पोकेमोन मिल जाए उसके बाद जाऊँगा बॉस पे। We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. A magnanimous decision. I can subscribe. Whoa. Seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels like she's dreaming. This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless.
Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Abarawa, Bosumtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. I've never heard those names before. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current plan will buy us some time. And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past. We should definitely try to avoid it if we can. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon, only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy. But Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate. And, in his final moments, told me the secret of the Gnosis. So it was him. Okay. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. Wait, do you know someone named Dainslev? That problem doesn't seem quite so extreme for him. You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the princess. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Yes, you're the brother of the princess. वही चीज हो गया भाई. Even the role I held in Conria. मेरा भी 3-4 बार हुआ, बट मैंने उसको टच करके वापस से उसी स्ट्रीम को वापस से स्टार्ट कर दिया था. मेरा न्यू नहीं स्टार्ट करना पड़ा मुझे. If the princess saw me now, I doubt she would even recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. We could have seen what I was truly capable of. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking hostages. My goal was the Gnosis,
and I failed to obtain it. That means I lost, plain and simple. Her Majesty the Tsaritsa allows every harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right! What happens when all 6 heroes are together? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Shibalanke gained. वो अभी रहेगा कंटिन्यू. तुम दूसरा स्टार्ट कर दो. Is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly वो 4 घंटे तक princess. रहेगा अभी. She controls the power of death. Wait, is that why you मत को तुम मिराई को मत को जोगा भाई. सीरियसली बोलो मत को. तुम्हारा फिर से क्रैश हो जाएगा यूजने से. As for the divine throne, हाँ एक बार ट्राई करके देखो. पर फिर से तो मत करना. यूजने से क्योंकि तुम बाय चांस गेम में पूरा मस्त घूम गए हो अचानक से तुम्हें पता चलेगा स्ट्रीम चल ही नहीं है. कभी-कभी क्या होता है ऐप ओपन रहता है और बैकग्राउंड में बंद हो जाएगा. with one notable distinction. The amount of हाँ power तुम्हारे पास 2 है. will मैं not भूल change गया depending on था. your उस टाइम एक ability था ना to मैं. tolerate it. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. That is my duty. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. I'm sure you're exhausted. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so we need to be prepared. When you put it that way, my mom feels even more exhausted. All right, so let's head back. क्या चीज मैं समझा नहीं. हाँ मेरी जान. टन 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 टन. फिर से न्यू स्ट्रीम में हुआ है ये पुरानी स्ट्रीम. मैं वही बोलना था जब तुमने पहली बार बताया ना. हो गया ना. टाइम लगेगा में भी. टाइम कंज्यूम करेगा थोड़ा शायद में भी तुम्हारा. That hurts. The monsters keep increasing in number. It's like something changed. It's definitely unusual and we should all be careful. But don't worry too much. You have us by your side. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's calling us. Something wrong? अच्छा सुनो 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 वो छोड़ो. मैं क्या कह रहा हूँ. तुम अपना अपना बेस बनाओ और प्रिपेयर रखना. ठीक है अपना आपको 151 ज्वाइन किया ना तुमने. VIP नहीं किया. अच्छा तुम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो भाई. तुम एक बार अपना मेन वंग नहीं करके दूसरे वंग में ज्वाइन करो. क्या तुम्हारा बेस तब भी आता है. अब पाजी फाड़ा पाजी.
हाँ मेरी जान। Nope. मैं We can't तेरा give any जान of नहीं तो these to बन our मेरी soldiers. जान। They were not tempered correctly at the forge. Well-made weapons and shields are vital for the survival of our people. हैं? I know we're under a lot of pressure, but we can't compromise on quality. Listen, I'm not blaming you. I know this isn't your usual standard of work. Why don't you all just take a break and I'll take care of the pieces. अरे मेरे को सजेस्ट किया था किसी ने, नाम मेरे को याद नहीं आया, तो मैंने इसमें चेंज कर दिया। I mean मैं लोगों की सजेशन नहीं लेता हूँ, चाहे मैं सब्सक्राइबर ही क्यों ना। Nothing I can handle. Just some rushed, defective goods, that's all. Even the most skilled craftsmen make mistakes under pressure, and if you two want to avoid the same fate, you should really get some rest. You must be exhausted too. Don't worry. I like it that way. बोइंग डे की वैसा है। अरे मदर फादर ब्रदर सिस्टर कहाँ जाना है? अरे मैंने किसी से पूछा भाई खाना कैसे खाते, बैग ओपन करके। मैंने कहा व्हाट द फक। फिर मुझे समझ आया बाद में। हाँ हाँ वो नहीं है जो मशीन से हम बनाते हैं बेस बनाने की है, उसके अंदर पोकेमोन अपना रख दो बस, वो रिवाइव होने लग जाता है। 10 मिनट में होता है रिवाइव। निंजा भाई तुम वापस कब आओगे मंदिर से? तो खेलो ना निंजा भाई, अपना बेस है वो विजिट करके आओ। देखो Tell you about it some other time. We won't keep you then. Let's talk later. भाई मैंने एक पोकेमोन पढ़ा था, मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। वो सांगा मैं उसको जो चीज़ समझ के पकड़ा स्ट्रॉन्ग और वो बंदा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। वो एनिमी को Auroron. Granny? What's wrong, Granny? It looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. Fuck भाई मेरा मन हट गया गेंशिन से, मुझे नहीं खेलना है मोबाइल को। I'm sorry. अरे हाँ मैंने बो एंड एरो यूज करने के लिए ना वो बनाया, फायर वांग एरो बनाया, वो यूज नहीं हुआ है। To run off last time and the time before that. Pretty sure I वो तो मैंने नहीं apologized चुका, those times बट वो too. एरो नहीं है पता। What exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that whole thing in the ancient ruin. I'm not the one who needs an apology. Apologize to yourself for risking your life. Okay. I'm sorry.
I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at अगर me उसको all you want. I ऑप्शन know को I ऑन करो messed ना, up. जैसे कि देखो उसमें तो एक तो ऑप्शन दिखाता है अपग्रेड का, एक टेलीपोर्ट का, एक जो तीसरा ऑप्शन होता है उस पर टच करो, ये तो उसमें सेकंड से बने रहते हैं ना, उसमें अपना पोकेमॉन ड्रैग करके रख दो बस. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices, but I don't regret it. I just had to do something. उसमें मैंने बेड भी रखा है. Not because I thought I was बूढ़ special, उठा करूँगा. because I wanted to help Natlan as much as I can. अरे भाई क्यों भाई किसका भाई जगह भाई. You're right. My apology doesn't mean much, but I don't know भाई what नहीं else I मन होगा can उसका. say. You even had Aoife bring me that gem. मूड नहीं होगा A उसका simple भी. thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome. Just make sure to thank Aoife sometime. I will. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Anyway, Like and subscribe. I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will and managed to become a hero. हाँ वो दिन में भी बताया वो जाएगा. Not too shabby, grandson. उसके बाद देखते क्या होता है. Traveler and Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fists do the talking. You're not off the hook just yet. बेस पे मैंने I told the पोकेमॉन छोड़े traveler होंगे I मैं was भी. going to break your legs. तुम निंजा भाई काम को तुम I दूर meant से एक every पोकेमॉन को हिट part of करके it. अपने साथ बेस पे क्या वो बेस पे वो पोकेमॉन उसको मार देंगे वो तुम उसे कैच Could करना. you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? Alright. Make me an offer. Given all the good things that I managed to आई मैं वो तो पकड़ पाऊँ बट मैं एरोस में लगा नहीं पाऊंगा फायर वांगी. समझ नहीं आ रहा क्यों. I promise to do better in the future. Fine. I can let this slide for मेरे now. हिसाब से मे भी फायर वांगी एरो के लिए तुम्हें टॉर्च से उसे जमाना पड़ता होगा पहले. We'll see if I change my mind. Oh, Traveler, Paimon. Didn't expect to अगर see उसको you देखो here. बो पे टच करो उसके बाद उसको इक्विप के ऑप्शन पे टच करो. तुम्हें पूछा किस में रखना है ए बी सी डी किस स्लॉट में रखना है तो उस स्लॉट में रख दो उसको बस. अच्छा तो मेरा तो हो गया था भाई. Looking after these little rascals is rather exhausting. Taking care of the traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. I won't. Let's get together sometime. If Auroron really wants to thank you, he can treat us all to a tasty meal. Sounds great. We'll be there. देखो आइकॉन क्वेस्ट कितना बचा हुआ है. अरे वाह की यहाँ कोई भाई मैं सीरियसली बताऊँ तुम सब ना वहाँ पे मिराई पो कर रहे हो. मैं आइकॉन क्वेस्ट खींचने का मन नहीं कर रहा. ऊपर से इसमें साउंड भी नहीं आ रहा ना बीच बीच में तो ऑफ माइंड फक होगा मेरा. भाई एक तो इसमें साउंड का भी तो वो है इशू. किसी कैरेक्टर की साउंड नहीं आ रही. ओ ये चीज कह रहा हूँ मैं. ये देखना पाइमोन और ड्रैगन कैसे होते साथ में. ये देखो दी गे प्रो मैक्स इसमें है जो कि भाई. You ready? Yep. Let's go meet the Lord of the Night. आई मीन जो कि भाई ने सही एशिया अच्छा कि तुमने एशिया चूज नहीं किया क्योंकि इन्होंने ना सबसे बड़ी गलती क्या की ना. इन्होंने लिमिटेशन जो सेट किया 8 प्लेयर्स की
अब वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा क्या सर्वर? So, this is where you heard the Lord of the Night? Guess that means she really has awakened. Hopefully we make it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. We need to forge a new ancient name for the Traveler. But we ran into a problem. He's not from Natland, so there are no records of him in the Night Kingdom. I see. Malwika must hold him in high regard. It would seem the two of you are not simply here on her orders. So, what say you? Do you believe this traveler to be deserving? Speak your mind. There are no others here. You are both my children, both children of Natlan. I would hear your opinions on the matter. He is special. He saved Kachina and devoted himself to helping us avert this disaster. Natlan owes him a debt. But that debt has not been repaid, and with an ancient name, we can at least guarantee his safety. Even though that guarantee will come at the cost of your own life? Yes. So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. But it takes time for the new concept to be integrated into that realm. If the ancient name is like a seed, then the life of the craftsman is the outer shell, serving as its protection. Once that process is complete, the seed will sprout, and having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. Forging an ancient name is no easy task. And creating one for an outlander makes it even more challenging. Still, if you're here, that means your mind is set. Yes, because I believe forging this name will be well worth it. We don't know how long we'll be able to hold back the Abyss, or what the final price of averting this disaster will be. If giving up my life means that all the people of Natlan can have a future, then the sacrifice is practically negligible. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This is a part of my duty. I understand. The chance may be exceedingly slim, but you still want to seize it, because this could be the final step to victory. And you, Siglali, the anxiety you feel, it's because you saw something, yes? Something you were not meant to see. So, you know about that too. What is she talking about? I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time. And too many things can go wrong. The Masters of the Night Wind have a ceremony. मेरा तो बो में स्विच हो गया है, बट पता है मैं बो में एरो यूज नहीं कर पा रहा. मेरे हिसाब से मैं नॉर्मल एरो यूज करना होगा. चार्ज एरो की अलग से बो बनती होगी. Pyro Archon has always been seen as a taboo. And you did it anyway? What did you see? मत को. स्ट्रीम का इशू है. A key part of Malika's plan is using the 6 heroes to release the power Shabalanke obtained from the ruler of death. Considering its origins, the price of using that power is death. You're saying Malika is going to die in this war against the Abyss? Yes. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the power of a Descender. Don't forget, Sid. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. The ruler of death's power will allow Malika to triumph over the Abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of death cares little for the time and manner of a death. She simply guarantees that it will occur. Fate may be able to influence the timing, but
That is all the Traveler can change. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not the outcome? I cannot help you with this, I'm afraid. It's beyond my capabilities. Malika knows about all this, doesn't she? Yes. I imagine she has long accepted this eventuality. Well, I can't. She's so strong. She never gives up, never rests until a problem is solved. She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it fate or death. We shall have to wait and see. But I will curb ओ भाई फाड़े आप ये साला कितना बड़ा आइकॉन क्वेस्ट है पता है आइकॉन क्वेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ना वो है ngong ज़्यादा खींच ज़्यादा है भाई ये यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए We won't forget your contributions. Once we deal with the abyss, we'll find a way to keep you alive. सुनो तुम अपने आप को मार दो ठीक है तुम मर जाओ जो निंजा भाई उसके बाद क्या कहोगे वापस से वहीं पे टीपी हो जाना ना अपने बेस के पास ही ना होगी तुम बेस पे टीपी होगे अपना सामान उठाओगे जब रिवाइव का ऑप्शन आता है ना तो तुम्हें टीपी पूछता है कहाँ टीपी होना है तो तुम बेस पे टीपी होना The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the abyss. कौन बैठा है All will cease to exist. When you consider all of that, extending my life is meaningless. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, humanity will still do whatever it takes to survive today. Exactly. Times like these always fill me with admiration and reinforce my commitment to the mandate I shoulder. My creator was right. ओ एक मिनट जो ये किनीचो इसकी वॉइस नहीं आई बहुत सारे कैरेक्टर्स की उसके लिए प्रीमोज देगी क्या होयोवर्स This is my gift to you and an extension of my will. हैं It can record the traveler's experience. देंगे भाई एक तरीके से वो ये भाई इसके लिए प्रीमोज जेम्स देंगे ही देंगे वो कोई चांस ही नहीं है ना दे इसके लिए भाई देंगे भाई मैं नहीं मान सकता ना देंगे कम से कम 150-200 तो कंफर्म ही देना पड़ेगा उन्हें क्योंकि ये उनकी मिस्टेक ही हमारा आइकॉन क्वेस्ट में वो हो गया है फन कम हो गया भाई मेरे हिसाब से तो देंगे देखते हैं क्या होता है देंगे कि नहीं देंगे बट मेरे हिसाब से तो देंगे 90% चांस है देंगे प्रीमोज भाई तुम्हें क्या लगता है जोकर भाई आई मीन देखो आइकॉन क्वेस्ट में ना 2 कैरेक्टर्स है जिनकी वॉइस नहीं आ रही ठीक है 2 कैरेक्टर ये मतलब 2-3 कैरेक्टर्स की तो उसके लिए जैसे कि उनको प्रीमो जम्प्स तो देंगे ही ना वो एज अ क्योंकि वो एक तरीके से बगी तो है ना उनकी हमारी नज़रों में ये आई मीन प्रीमोज देंगे ज़्यादातर चांसेस इसी के है क्योंकि वो आइकॉन क्वेस्ट के अंदर तुम्हें स्टोरी में वॉइस नहीं आ रही है कोई नॉर्मल गेम थोड़ा ना जिसमें वॉइस नहीं आ रही है 90% चांसेस है कि वो देंगे प्रीमोज कम देंगे बट देंगे जरूर एटलीस्ट 100-200 प्रीमोज We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. नोक हो गया I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, नहीं वो उठा के तुम इधर उधर जा सकते हो जहाँ पे जाने Just keep it with you during your time in Netland, and eventually it'll be full of your adventures. Really? Let Paimon see! Oh, it's the 2 of us! And a sun in the middle! Oh, and that must be... It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will and shows what she wants you to see. क्या बोलूँगा निंजा भाई? In other words, don't worry about his form. When you want to check the contents, just take it out and have a look. Sounds convenient. It's also super light and doesn't take up too much space.
This is a really awesome gift. Oh, yeah. We'd feel bad accepting something like that. Oh, yeah. Don't worry, you two. It's, you know, like you saw yesterday, aiding humanity is the Lord of the Night's mandate. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in return for this. Exactly. Well, if you say so. Okay. तो मैं प्लान तो सिंपल सा है ब्रदर. बॉस फाइट करेंगे निंजा यार हम भी. We just fought them off. We can figure that out later. Let's go. तेरा होने लगा है जो कि भाई मेरा बॉय क्यूब हुआ बट वो शॉट नहीं कराया भाई. मुझे भी नहीं पता ये सारी चीज. रीस्टार्ट करूँगा वो. करना पड़ेगा. I mean, देखो तुम फाइट के बीच में कहोगे फिर अभी वही बात तो वही होगी. अरे वो सुनो पता है क्यों है निंजा भाई. तुम्हारे बैग में सामान ज्यादा हो गया, वजन ज्यादा हो गया. तुम्हारे बैग का सामान आधा सामान उठा के चेस्ट में रख के आओ, फिर वापस जाके सामान उठाओ. बैग का वजन बढ़ गया इसमें, वो भाग नहीं पा रहा है. मैं तुम्हें को सुनकर तुम्हारा नॉक हो जाएगा कोई चीज, इस वजह से मैं कंफ्यूज हुआ. वो तो तुमने जब तुमने कहा ना सामान उठाने के बाद, तब मैं समझा कि उसका वजन बढ़ गया है, वजन ज़्यादा हो गया है उसका. उसको ना ड्रॉप कर दो ना उसी जगह पे. उसमें ऑप्शन दिखेगा, वो सामान ड्रॉप करके वापस आ जाना उठाने. फर्क नहीं पड़ता. पत्थर फेंक दो अभी के लिए. वुड फेंक दो. वुड तो अपने घर के पास है. अगर तुम्हारा गायब भी हो गया तो तुम्हें टेंशन नहीं है. वुड तो अपने घर के पास बहुत है. पत्थर उठा के रखना. पत्थर मिलता है वहाँ पे आसपास. We're here. What's going on? Kachina said the abyss attacked again? I mean, बहुत शूट करने की कोशिश करो ना एक बार. Our forces have always been able to handle the sporadic attacks. तुमने कौन सी जगह बनाई, नॉर्मल या फ्लेम वाली? तुमने बनाया कौन सा है? अरे यार मेरे पास फ्लेम वांगी आया हुआ है, बट वो चल नहीं रही. नॉर्मल वांगी तो मेरी भी चल रही है. शायद फ्लेम की अलग से बहुत चिपचाती होगी. Not just around the stadium, but even the remote areas of the Collective of Plenty are reporting attacks. Could this also be some kind of omen? If things continue like this, then तुमने क्रिएट कौन सा किया, फ्लेम या नॉर्मल? I know. What we're seeing now is the desperation of the abyss. It knows we're मेरा one hero short. नॉर्मल वांगा है और एरो फ्लेम वांगा है. I don't have the strength तभी to नहीं fight चलना it वो. right now. This is its best opportunity and its final chance. You're saying we just एक मिनट निंजा भाई की वॉइस नहीं आ रही. क्या बोलेंगे निंजा भाई? It'll be a long fight. Our current focus needs to be on protecting civilians and conserving manpower. There are caravans and adventurers trapped in the wild. Many of our warriors. मैं आइकन क्वेस्ट भाई 2 घंटा होने वाला है. 11 मिनट में 2 घंटे की स्ट्रीम हो जाएगी, एंड कर दूंगा. All right, Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. Sitlali, you're needed in the Masters of the Nightwind. As an important. तुम तब तक सामान इकट्ठा करना ना, वुड ये सब इकट्ठा करना. खाना वाना इकट्ठा करूंगा मैं, बस खाना नहीं बिकूंगी. Understood. I'll leave right away. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan. Update them once you've completed your mission, and they'll compile the information into a battle report. As I receive intel from the various regions, I'll plan your next move. All right, no time to lose. Let's go! What about us? Where should we go?
I received word that a small team escorting civilians back to the stadium was attacked. They won't be able to hold out for long. Can I leave them to you? Thank you. The hot air balloon is over there. नहीं दिखाता, वो नहीं दिखाता है। ओके, अब ये क्या है? फक भाई, अब आओ भाई, मैं भी आओ को भाई। तो मैं गेम स्विच करो यार, को नहीं भाई।